Hello and welcome back to the channel. This is Ramesh and you're watching my lecture series. In today's session, we are gonna talk about a very brief poem which is actually a prayer written by Rabindranath Tagore. Before we move on to the explanation of the poem, let us briefly talk about Rabindranath Tagore. The very first point which we need to remember is Rabindranath Tagore was a polymath. Now, you may ask me, what is this polymath? Polymath means a highly learned man, okay, which has the specialization in the number of subjects, right? Polymath उस इंसान को कहेंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और जिसके पास जो बहुत ही सारे सब्जेक्ट्स का स्पेशलाइज्ड हो, उसे हम पॉलीमैथ कहते हैं. नाउ आई होप यू लर्नड अ न्यू वर्ड टुडे, पॉलीमैथ. नाउ सेकेंडली, Rabindranath Tagore was born on 7 May 1861 and he died on 7 August 1941. He was a Bengali writer, was born in Calcutta, Bengal, right? He was a Bengali writer. And he was a poet. He was a poet. He was playwright. And he was a philosopher. Now, Rabindranath Tagore has written a collection of poetry known as Gitanjali, which means song offerings. And this book got so famous, he received the Nobel Prize for this book in 1913. Okay, and because of the being the philosopher, being the playwright, poet, and having the kind of feeling or being the philosopher, he was known as the Bard of Bengal. Or Gurudev. Such was his fame. Now, talking about his poem, which is having only 7 lines. It is a very beautiful poem which talks about love, which talks about actually care, right? Which talks about the strength. This is, as I said, a prayer. So let's begin with the recitation of the poem. This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent mind. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. This is a very short poem, as I said, of 7 lines. Now, let's begin with the meaning of this poem. The poet Rabindranath says, "This is my prayer. This is my prayer to thee." Thee is the archaic form of you. Okay? In the earlier times, people would use thee instead of you, right? This is my prayer. So, the poet is saying that I am praying to you. That means the speaker is speaking to God, right? These words are directed to God. This is my prayer to thee, my Lord. ए मेरे खुदा, मैं आपसे दुआ मांग रहा हूँ. Strike.
strike at the root of penury in my heart. Before understanding this line, we have to understand what actually penury means. Penury means extreme poverty. Extreme poverty. But it also can mean lack of love. Lack of love and care and compassion. Now says, strike at the root of penury in my heart. If there is lack of love, there is lack of compassion, there is lack of mercy in my heart, strike that. ऐ खुदा, अगर मेरे दिल में कहीं बुग्स है, मेरे अंदर प्यार नहीं है, मेरे अंदर कंपैशन के जो फीलिंग्स है वो नहीं है मेरे अंदर मर्सी के फीलिंग्स नहीं है, प्लीज स्ट्राइक माई हार्ट. Strike it loudly so that the lagness or the lagging or the weakness is changed into the power and strength. Give me the strength, poet says to Allah or to his God, that give me the strength, मुझे ताकत दे, lightly to bear, ताकि मैं बर्दाश्त करूं, my joys and sorrows, so that I can tolerate the joys, I can control myself when I'm feeling happy, and I can control myself when I am in the sorrow, when I'm having grief, when I'm not in the great mood. तो मुझे ताकत दे कि मैं खुशियां भी बर्दाश्त करूं और मैं गम भी बर्दाश्त करूं. Give me the strength to make my love fruitful. मुझे ताकत दे कि मैं अपने प्यार को फ्रूटफुल बनाऊं, राइट, उसको और ज़्यादा निखारूं, उसको और ज़्यादा अच्छा करूं इन सर्विस. तो जब तक मैं प्यार करूं, जब तक मैं ज़िंदा हूं, तब तक मेरा प्यार जो है तब तक वो फ्रूटफुल रहना चाहिए. मुझे ऐसी ताकत दे, राइट. गिव मी द स्ट्रेंथ never to disown. Disown is the opposite of own, having something, right? So poet says that give me the strength, मुझे ताकत दे, never to disown the poor, ताकि मैं कभी गरीबों को धुतकारूं नहीं, कभी उन गरीबों को दूर नहीं भगाऊं, कभी उनको disown ना करूं, और bend my knees before insolent might, और कभी मैं अपने knees bend नहीं करूं, कभी मैं किसी के सामने नहीं झुकूं. किसके सामने नहीं झुकूं? Whosoever is insolent. Insolent हम कहते हैं rude को, being rude. Okay? बहुत ज़्यादा बुरा रहना या disrespectful. तो मैं उसके सामने अपने घुटने ना टेकूं जो कि disrespectful हो या जो rude हो, जो तकब्बुर में फंसा हुआ हो, जो घमंडी हो. मैं उसके सामने अपने घुटने ना टेकूं और जो गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद कर सकूं. Give me the strength to raise my mind. The poet says that give me the power, give me the strength to raise my mind, ताकि मैं अपने दिमाग को बहुत ही ऊंचा करूं, high above the daily trifles, ताकि ये जो दुनिया के चीज़ें हैं, materialistic goals हैं, हमारे little values, उतनी वो चीज़ें हैं जिनका वैल्यू बहुत कम है, जिनकी significance बहुत कम है, उन सब चीज़ों से मैं ऊपर आ जाऊं, right? जो materialistic जो चीज़ें हैं उन सब से मैं ऊपर आऊं, right? I want to give preference to love. I want to give the hand to the poor, to those people who are in want, who are in need. तो मैं किसी का सहारा बनना चाहता हूँ. मैं नहीं रहना चाहता ऐसी दुनिया में जहाँ सारे लोग मटेरियल के पीछे भागते हों, जहाँ फजूल चीज़ों के पीछे लोगों ने प्रेफरेंस दी हुई हों. तो मेरा दिमाग इन सब से ऊंचा कर. मैं इन फजूल और इनसिग्निफिकेंट कामों में अपने दिमाग को, अपने दिल को नहीं बिजी रखना चाहता. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. मुझे ताकत दे ताकि मैं सरेंडर करूं, ताकि मैं गिव अप करूं, ताकि मैं I yield myself, my strength to thy will. Thy is the archaic form of your will. आपकी चाहत के सामने मैं अपना सारा पावर, सारी स्ट्रेंथ, सारा माइट मैं आपके सामने सरेंडर करूं विद लव. ओके, प्यार से मैं पूरे अपने वजूद को, पूरी अपनी एग्जिस्टेंस को आई वॉन्ट टू सरेंडर माई सेल्फ, माई होल बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. सो ये तो एक साइड से दिखाता है कितना ये जो है डाउन टू अर्थ है पोइट इन फ्रंट ऑफ गॉड, बिकॉज ही हैज़ दिस काइंड ऑफ फीलिंग. ही वॉज नॉट एग्नोस्टिक, ही वॉज नॉट an atheistic in nature. That's why he was begging God that I want everything from you,
राइट. आई वॉन्ट टू कम टू योर अम्ब्रेज, मैं आपके साए तले रहना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी इन योर फ्रॉम योर पार्ट, राइट. गिव मी पावर, गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी एवरीथिंग विच मेक्स मी पावरफुल इन द वर्ल्ड, राइट. और ये वैसी चीज़ों के लिए दुआएं मांगता है जो इसके लिए दुनिया में भी काम करें और आफ्टर लाइफ में भी ये काम इसको आए. Now, this as I said, this is a very shorter poem written by Rabindranath Tagore. Let's talk about. I hope this little poem is understood to you, all of you. Now, talking about the literary devices in the poem, the first one is repetition. Repetition is the repeating the words, right? Repeating the word or repeating the phrase, right? For example, give me the strength. You see this half line, give me the strength, or this phrase has been used in the third line, in the fourth, fifth, sixth line, and the seventh line, right? So this line has been used repetitively, so we say repetition has been used in the poem. हमने देखा कि इस लाइन को बहुत बार रिपीट किया गया है in the beginning of each line, so this is repetition. Then the second literary device is alliteration. Alliteration क्या होता है, जिसमें आपको जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में बार बार आ जाते हैं, वो कॉन्सोनेंट वाले साउंड्स. फॉर एग्जांपल, यू आर लुकिंग एट लेटर एम हेयर, राइट. एस हेयर, एस, राइट. आर हेयर एंड आर हेयर. So these are all the examples of alliteration. Now I have already discussed about what actually the literary devices are, and my whole session will be on, inshallah, in coming days. I will be uploading a video on, especially on literary devices, what are actually literary devices and what is the use and what is the aim of using the literary devices in the poem. I will be giving, or I will be uploading the video soon, inshallah. Hope you will like that also. Now, coming upon to the questions of the difficult words in the poem. First one is penury. As I told you, it is the lack of love or lack of compassion, hard-heartedness or extreme poverty, you may say. Insolent होता है disrespectful, बहुत ही ज़्यादा rude, okay? या वो इंसान जो घमंडी हो. Fruitful, जो useful हो. Might means power. D means you. Trifles means things of little value, जिनको कम वैल्यू हम देते हैं लाइफ में. The poet is actually referring to the materialistic goals. Die means your, disown means not own, surrender means give up, right? Now let's talk about the questions. See, I have shown you the questions here in the video, but I may not be discussing the answers, but I will give you the idea of each question in the video. Why does the poet want God to strike at his heart? ये क्यों चाहता था पोइट कि खुदा जो है वो उसके हार्ट पे स्ट्राइक करे, ताकि वो दुख को, वो खुशियों को बर्दाश्त कर सकें. और जो भी लोग चाहे घमंडी है वो उनके सामने नहीं झुकना चाहता है, और जो भी ऐसे गरीब लोग हैं वो उनकी हेल्प करना चाहता है. दैट इज़ वाई पोइट वांटेड गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 is done. Question number 2. Why does the poet want the strength for? What does the poet want the strength for? वो किस लिए ताकत चाहता है? ताकि वो जॉयज़ एंड सॉरोज़ को बर्दाश्त कर सके, ताकि वो जो नीडी पीपल हैं उनकी मदद कर सके, ताकि वो उन लोगों के सामने खड़ा हो सके जो कि बहुत ही ज़्यादा माइटी लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रूड हैं, उनके सामने घुटने नहीं टेकना चाहता. वो पावरफुल बन जाता है पावर के सामने, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग बनना चाहता है जो बेचारे नीडी और गरीब लोग हों. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ कैन लव बी मेड मीनिंगफुल इन वंस लाइफ? कैसे हम लव को मीनिंगफुल बनाएंगे अपनी लाइफ में? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोएट हम कैसे लाइफ को लव को मीनिंगफुल बनाएंगे? वो ऐसे कि हम अपनी लाइफ को सर्व करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर पीपल एंड टू वर्शिप गॉड. दो चीज़ें वी नीड टू रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन, दैट फर्स्ट ही wanted to worship God, right? He wanted to surrender before God, and the second is to help the poor. ठीक है? That's why he says that कि उसकी लाइफ मीनिंगफुल है जिसकी लाइफ में एक तो वर्शिप हो गॉड की, and the one who is helping the poor people. Now talking about the fourth question, what should our attitude be towards the poor? According to the poet and
this poem, the poet wants every human being to be very helpful to the poor people, right? We need to help all those who are in want, who are in need. Question number 5, what does bend my knees signify? It means that giving up, right? किसी के सामने झुकना. Bending my knees doesn't mean actually that you are bending your knees, right? It means that you are surrendering before someone who is having the power, right? Who is very mighty. तो उसके सामने घुटने टेकने का मतलब है कि उसके सामने आप गिव अप कर रहे हो. तो पॉइट ये नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे इंसान के सामने घुटने टेके जो कि पावरफुल हो. Now, question number 6, why does the poet want to raise his mind high above daily trifles? वो क्यों चाहता है कि ये जो daily trifles हैं, ये जो useless की चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें और all the materialistic things in the world, वो क्यों चाहता है इन चीज़ों से वो ऊपर आ जाए? क्योंकि वो चाहता है कि ये जो चीज़ें हैं according to his belief, वो बोलता है कि मेरे सामने ये जो सारी चीज़ें हैं they are of little value, उनकी कोई हैसियत नहीं है. तो वो चीज़ें हैसियत रखती हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर द पीपल, जो कि लोगों की मदद के लिए, जो लोगों की बेनिफिशियल उनकी प्रॉफिट के लिए, राइट, उनके जो है भलाई के लिए जो भी चीज़ें हों वो सारी अच्छी हैं. एंड दोज थिंग्स विच आर हैविंग द लिटिल वैल्यू लाइक एनीथिंग, एनी मटीरियलिस्टिक थिंग इन द वर्ल्ड, तो वो उन सब चीज़ों के खिलाफ हैं. एंड ही डज नॉट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स, राइट. हिज प्राइमरी एम of life is to worship God and help the needy people. Now, the last question of today's session is, why does the poet ask for strength to surrender his will to God's will? वो क्यों कहता है खुदा को कि मुझे ताकत दे कि मैं अपनी विल को सरेंडर करूं तुम्हारे सामने? क्योंकि वो ही उसको जो असली जो प्लेजर उसको मिलता है ना, जो उसको एक खुशी मिलती है, वो उसको खुशी तभी मिलती है when he bows down his head before God, जब वो अपना सर झुकाता है खुदा के सामने. और उस हिसाब से जब whenever he bows down his head before God, तो वो प्योरीफाई होता है उसका सोल और उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरती है. तो इसीलिए ये चाहता है कि मैं अपनी विल को सरेंडर करूँ बिफोर द विल ऑफ गॉड, सो दैट माई लाइफ कैन बी प्योर एंड सो दैट आई कैन सर्व द होल humankind, right? So this was the last question of the session. So I hope this all was understood to you. So I talked about the the explanation of the poem, then we talked about the difficult words, then I discussed the questions. Hope you liked this session. I want a thumbs up from your side. If you like the video, subscribe to the channel because it gives me a kind of feeling of uploading the videos continuously. Right? So having any questions and queries, you may write in the comment box. Thank you so much.